You're watching the news at 5 p.m. with me, Shavan Sen. We are broadcasting from Seelampur area, the epicenter where the violence actually broke out. Viewers, in the next few minutes, we'll take you through every possible angle of what really transpired. We are giving you a bird's eye view of the very area where the protest took place. Let me just quickly tell you what's the current situation is like. The situation at least appears at this time normal. Situation is under control at this point in time. There are people who have come out of their homes right now. This entire area is basically a market area. This market was completely shut down today. Generally, what the locals are saying that on a Wednesday, these markets are generally closed, and that perhaps has saved the much damage that could have taken place because of the violent protest that you're seeing. Right now, on your screens is the very area where the deployment has taken place. That's the Rapid Action Force as well as the Delhi Police that's on standby. जब हम लोगों की रिक्वेस्ट उन्होंने मानी, डिस्कस होने वाले थे, इतने में अचानक से जो है वो पत्थरबाजी शुरू कर दी उन्हीं के बीच में से कुछ लोगों ने, और वो पत्थरबाजी बढ़ती गई। उसमें छोटे बच्चे भी थे, बड़े लोग भी थे, काफी लोगों ने जो है वो पत्थरबाजी की। बच्चे भी तो ये आसपास के सर सीलमपुर के लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, या जांच होगी इसके बाद साफ होगा? ये हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर ये प्रदर्शन किसने शुरू किया था? किसने कॉल किया था? कोई रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने कॉल किया? किसी ने कॉल नहीं किया था प्रोटेस्ट, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन माइक नीचे। तो ऐसा लग रहा है प्लानिंग का पार्ट था ये इस तरह से हंगामा करते इकट्ठे हुए थे, और सभी लोग जो है वो पहले इन्होंने सीलमपुर में राउंड लगाया, वहाँ इनकी संख्या बढ़ गई। जब ये जाफराबाद की तरफ आए तो वहाँ और संख्या बढ़ गई, और मौजूद चौक और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के आसपास करीबन 2 से 3 हज़ार लोग। कितने इसमें घायल हैं? प्रोटेस्टर्स कितने? अभी स्टॉक ले रहा हूँ थोड़ी देर बाद। कितने लोगों को डिटेन किया? मॉब की कौन अगुवाई कर रहा था ये नहीं पता चला अभी तक। देखिए जांच का विषय है, कहाँ रोल हो रहा है, किसको चोट लगी है पब्लिक को, और तो ये कहा जा सकता है सर सीलमपुर प्रोटेस्टर्स को, ये मैं डिटेल आपको ये कहा जा सकता है सीलमपुर, जाफराबाद, कबीरनगर हर जगह कुछ बाहर के लोग भी कहे, ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्योंकि सीलमपुर और जाफराबाद से शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ के अभी हालात कैसे? अभी हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की है शांतिपूर्ण रहने के लिए, अभी शांतिपूर्ण है, स्टाफ लगा हुआ है, बाकी सिचुएशन जो है वो वोलेटाइल है। आपकी किसी से बात हुई है? सब कुछ बता रहे हैं लोग, आप लोगों का कोई इंटरेक्शन हुआ इन लोगों से कि इनकी क्या चाहते हैं, क्यों प्रोटेस्ट है, क्या डिमांड है? ये इन्होंने जो CAB है, CAA है, इसके अगेंस्ट में इन्होंने शुरू में नारेबाजी करी थी। बाकी उस संदर्भ में किसी ने कुछ हमें बात नहीं बताई है, ना ही कोई ज्ञापन दिया है, तो वो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं। तो आठ महीने से दोबारा रखा कि कितने प्रोटेस्टर्स कितनी संख्या में लोग? Hello. What you're basically looking at right now is the current situation in the Seelampur area, where the Delhi police has also been saying that there was perhaps an element of a provocation that actually took place. Now, let me quickly take our viewers through what we have gathered so far after speaking to some locals, and I'll also get in some locals to give you an understanding of how it all started. This is what we are picking up. This was late last evening, around 8 o'clock is when one rally was taken out in this particular area. I'll ask my video journalist to stay with the visuals right now. In this very area where we are broadcasting from right now, that's where the rally was brought out around 8 o'clock last evening. It was, as the locals say, was completely peaceful. Today around 10 o'clock in the morning, that's when another rally was brought out. This rally was specifically targeting the government. Situation went out of control around 1 o'clock when the Seelampur flyover, unfortunately I do not think so we can show you the flyover, which was completely blocked this afternoon. That's when things took an ugly turn. And then what you see right now, where the gathering is taking place, where a lot of people have come out, where the police deployment is taking place, that's where we saw those visuals in the afternoon coming in from, where there was a lot of clashes. And right now on the streets also, as we were coming inside, we saw glass shards lying on the road, and there were certain shops that were completely vandalized. So the intensity of the clash was also a lot. Let me try and bring in some of the people who are here, locals who have seen what has really happened. आपसे जानना चाहेंगे, विस्तार में बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था, कितने बजे लोग आए, और उसके बाद कैसे, किस तरह से जो प्रोटेस्ट वायलेंट बन गया, हुआ क्या था, ये बताइए। ये सुबह 9 बजे के करीब पब्लिक इकट्ठा हुई थी यहाँ पे। करीब ये फ्लाईओवर पूरा जाम था, और करीब चारों तरफ से पब्लिक इकट्ठी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद में ये यहाँ पे मजमा इकट्ठा हुआ था थोड़ा सा। उसके बाद में ये मतलब लाठी चार्ज वगैरह जो हुई थी,
क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए थे आज ये पूरे प्रोटेस्ट के लिए, कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि आजू बाजू के लोग यहाँ पे आए थे? आजू बाजू के भी थे यहाँ। कौन से एरिया से थे ये लोग? जाफराबाद से, ये अपना मौजपुर से, और ये गौतमपुरी से भी है। एक ही इलाका लगता है सारा। ये इस इलाके से लोग हैं, यहाँ के इलाके के लोग इस सारे मतलब यहीं के हैं, इसी इलाके के हैं और कहीं के नहीं है। और किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ किस तरह से की गई कि यहाँ पे दुकानें की कुछ पहले पथराव हुआ है, दुकानें बंद हो गई, पहले पब्लिक ने पथराव किया, फिर पुलिस ने पथराव, फ्लाईओवर पे ही पथराव शुरू हो गया था, वहीं पे flyover से पथराव. So there you have voices, people who are staying here. They say that the flyover was also completely blocked. The stone pelting actually started barely about a couple of meters from where we are broadcasting from. Let me also go across to my colleague Anuj, who is also at another vantage point to get you an understanding of what's actually happening. Once again, I'll just get you some visuals. There are people who are running right now. There are people running right now. We still do not know what's really happening. These are the visuals. So, and we're getting out, these are the visuals. I'll still suggest, since we do not know what has really happened, what has really triggered off, so we'll try and we'll just stay with what we know right now. We just saw a couple of people who have just run from here. Not very sure what really has happened. We'll try and get a confirmation of whether at all what is the trigger point for people running. But again, it's back to normal. Thank you. लोग अचानक यहाँ भागना शुरू हो गए एकदम से। फिर तो आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा न्यू सीलमपुर रोड है। यहाँ पर लोग एकदम से वहाँ से भीड़ जो है वो भागती हुई दोबारा आई। इसी तरह का माहौल था यहाँ पर, इसी तरह का माहौल था यहाँ पर। आपको दिखाएं चारों तरफ यहाँ से लोग भागते आए, अभी यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ ठीक हुआ, उसके बाद वहाँ भाग के निकले। और ये तमाम क्या हुआ था वहाँ? यहाँ पे भाग रहे हैं ऐसी खामा भाग। अच्छा, तो यहाँ पर ये लोग देखिए, पूरे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर लोग अभी भाग के वहाँ से आए हैं। पूरा आप देखिए यहाँ पर, हालांकि पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ये लोग हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया। अब सब लोग पहले अपने घरों में चले गए थे, उन्होंने लॉक कर लिया था, और अब अचानक से क्या हुआ था वहाँ? क्या हुआ था? ये मामूलों मार रहे हैं हमारे को और उल्टा। तो आपको क्यों मजमा लगवा रहे हो भाई साहब? ये चलो, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से। Well, also, let me go across to Anuj, who's at another vantage point. We're given to understand that some tear gas were fired. Anuj, if you can hear me, take our viewers to what's actually happening from where you are broadcasting, and also just tell us where exactly are you, so that the viewers can also get a whole idea of from the place from where you are broadcasting. Well, actually, Shavan, there on the screen you can clearly see these are the visuals coming in from the Seelampur area, from the Jafrabad area only. Behind me is the Seelampur flyover, and just near a few meters away from there, the protests still continue. You can see the protesters over there; they are still protesting, and rather we can show you the condition on the ground also, that what exactly was happening on the ground. A few time back over here, you can see the stones, how the stones was pelted, but at the same time, we just saw action therein when these protesters were trying to move toward the police barricades and the police forces which is deployed few meters away from here. And now you can clearly see these are the protesters who are again protesting, and the visuals are speaking themselves that what exactly would have been the condition earlier also. There you can see, I'll ask my video journalist to give you the sense also from here, these kind of stones that has been used, and there in front of me you can clearly see these are the protesters who are still protesting at this point in time. So continuously the protest is on. They are sloganing Delhi police hi hi. They're protesting against the Modi government. Yes, this has been confirmed that this is against the Citizenship Amendment Act. But who exactly these people are, and what we have been told, the earlier information is coming that yes, they are not
from outside. They are from the nearby area also. As we were talking to the police personnel also, though he was also confirming that the nearby area is Seelampur and Jafrabad, and this rally which was organized early in the day at around 10 p.m. the protest which was organized was the people was from Jafrabad and Seelampur only. This is very early to say whether these people are from outside also, but as we are continuously giving you the sense and continuously giving you the visual that what exactly is the situation at this point in time, there you can clearly see the protesters are still there. The kind of happening is making it very much clear. The ground level situation is still tensed in the Seelampur area and Jafrabad area. So behind me, there I'll ask my video journalist to give you a 360 view of the area. That is Seelampur flyover, and there we can see the barricading. There we can see the police which has been deployed with the RAF. On my left, सोशल नेटवर्किंग साइट में हमने देखा, जैसे आपने भी जिक्र भी किया था, कि काफी ज्यादा र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, काफी ज्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के खिलाफ दी जा रही है, ताकि लोगों का गुस्सा जो है इस वजह से भी बढ़ रहा है। तो क्या आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो लोग इस तरह से चीजें कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई? बिल्कुल, सोशल नेटवर्किंग पे जितनी भी साइट्स है हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरह के हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे और जो भी र्यूमर्स आ रहे हैं उसको हम काउंटर भी कर रहे हैं। और आपको मैं मीडिया को भी यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इस तरह का र्यूमर आता है पहले आप वेरीफाई करें, उसके बाद ही आप इसको चलाएं और सोशल मीडिया में जो भी इस तरह का र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करेंगे उस पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे।